I'm not gonna lie, this is my 8th take trying to record this podcast. I don't know, bro. कभी कभी होता है ऐसा. You are like fucking thinking too much कि oh ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा. But I'm not changing shit anymore. This is the eighth take, and welcome back to Inside My Brain with Ankit Singh. I'm Ankit Singh. If you didn't know, I'm Ankit Singh. Hi, how are you doing? See, मैंने 3-4 और टेक्स में मैंने ऐसे ही बोला कि हाय हाउ आर यू डूइंग. तुम लोग मुझे वापस नहीं बताने वाले कि तुम कैसे हो. सो 3-4 टेक तो उसमें चले गए. एंड बट आई एम नॉट स्टॉपिंग दिस नाउ. हाय. सो टुडे आई एम रिकॉर्डिंग अ सोलो पॉडकास्ट बिकॉज आई थिंक लास्ट 2-3 पॉडकास्ट गेस्ट के साथ थे. And I had fun recording those, bro. It's so much fun talking to people and getting to know कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, because the world is filled with interesting people, to be honest. Like फुद्दू लोग भी हैं दुनिया में, but अच्छे लोग भी हैं बहुत ज़्यादा. So last 2-3 podcasts I did with my friends. It was fun, man. It was super fucking fun. But today I'm doing a solo podcast because I don't know, I just got an idea. I want to talk about hopefulness and nihilism. Like, are you hopeful? Are we supposed to be hopeful about life, or are we supposed to be nihilistic? Because दोनों ही बड़े attractive है ना, like hopefulness and nihilism. When you are like, we're gonna talk about it, but उससे पहले I want to tell a story. So एक हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते पहले मैं अपने दोस्त हकम के यहाँ से वापस घर आ रहा था. We were at his studio. हम रात भर गाने सुन रहे थे. We recorded a podcast and we were vibing to songs. और लाइक सही मज़े आ रहे थे भाई. तो रात भर हम उसके घर पे ही थे. एंड फिर मैं सुबह वहाँ से 6 बजे मेट्रो चलती है, अगर तुम दिल्ली में नहीं रहते तो सुबह 6:10 पे पहली मेट्रो चलती है दिल्ली में. सो मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया 6 बजे एंड 6:10 पे मैंने मेट्रो पकड़ी. एंड द मेन पॉइंट इज़ मैंने हाथ में गिटार पकड़ रखा था बड़ा सा. सो हुक्म के यहाँ पे पता नहीं मुझे बहुत देर से ना गिटार सीखने का मन था. आई जस्ट वांटेड टू टच अ गिटार फॉर सम रीज़न. लाइक मैं यूट्यूब पे देखे जा रहा था बहुत सारी गिटार, लाइक जितनी भी लेजेंडरी गिटार सोलोज हैं या फिर एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू गिटार. एंड मेरे को बड़ी अट्रैक्शन सी हुई थी गिटार की तरफ. सो व्हेन आई वेंट टू मीट माय फ्रेंड हुक्म, उसके स्टूडियो के कोने में एक गिटार रखा हुआ था. एंड आई वाज लाइक ब्रो, this universe is playing games with me. So I was like, I'm gonna ask him if I can take his guitar. So I asked him because he's a sweet human. So he said, okay, ले जा bro, कोई सीन नहीं है. So I picked up his guitar. Imagine सुबह के 6 बज रहे हैं, Delhi. People are going to fucking jobs. और मैं अपने हाथ में like a fucking hippie गिटार लेके मेट्रो में जा रहा हूँ. So everybody was staring at me. मेरे को वैसे ही awkward लग रहा था. I was like, what the fuck is this? Why are people staring at me? और मैंने एक तो मेरे को गिटार पकड़ना नहीं आता, तो मैंने ऑकवर्डली गिटार पकड़ा हुआ था. एंड कोई कवर वगैरह नहीं था, हुक्म के पास कवर नहीं था. सो ही जस्ट गेव मी द गिटार. ही वाज लाइक ले भाई ले जा ऐसे ही. सो इट्स लाइक अ नेकेड गिटार. और मैं नेकेड गिटार, वाओ. सो मैं नेकेड गिटार लेके जा रहा था मेट्रो में. आधे घंटे बाद 6:30 पे मैं अपने स्टेशन पे उतरा जहाँ पे मैं रहता हूँ. सो बिकॉज लाइक ऑफिस आवर्स हैं, हर कोई ऑफिस जा रहा है, कोई भी मेट्रो से घर वापस नहीं जा रहा, तो कोई रिक्शा नहीं मिल रही मुझे घर जाने के लिए. सो आई वेटेड फॉर लाइक 10 minutes. देन आई वाज लाइक फक इट, मैं पैदल जा रहा हूँ घर. इट्स लाइक 3 किलोमीटर है मेरा घर मेट्रो से. सो आई वाज लाइक फक इट, आई एम गोना वॉक. और मैंने क्रॉक्स पहने हुए थे, सो इसलिए मेरे को 10 मिनट वेट करना पड़ा. अगर मैंने शूज़ पहने होते मैं चला जाता यूँ ही, बट मैंने क्रॉक्स पहने हुए थे. सो आई वाज लाइक ये दिस इज नॉट गोना वर्क आउट, बट फक इट. मैंने सोचा कि फक इट, अब जा रहे हैं हम पैदल ही. So I started walking. हाथ में just remember, हाथ में गिटार लेके everybody is staring at me. So पीछे से एक कैब आती है. मैंने कोई कैब बुक नहीं करी. कैब वाला बंदा बोलता है बेटा कहाँ जा रहे हो. और लाइक मैंने अपने घर का एड्रेस बताया. एंड ही वाज लाइक ओके हॉप इन. और लाइक ओके. मेरे को बड़ा awkward से लगा पहले कि लाइक ब्रो, these fucking cab drivers they never stop. And I asked them कि कितने रुपए लोगे आप. So he said 20 rupees. जो भी तू देता भाई रिक्शे वाले को वो मेरे को दे दियो. So I was like, okay bro, I give him 20 rupees, I'll give you 20 rupees. So I threw the guitar in, threw my bag in, and then threw myself into the fucking cab. तो अंदर बैठ गया मैं. And now we are going. And मेरे को like I think मेरे को थोड़ा सा अंदाजा हो गया था. That guy fucking loved music. And he saw a fucking guitar in my hand and he thought that I'm a musician. इसलिए he just wanted to talk to me because he thought I'm a musician. So we started fucking, वो गाड़ी चला रहा है. He was like an old guy, bro. He was like an old guy.
So after a while उसकी चिल तो हो ही रखी थी. So he asked me कि आपको हारमोनियम बजाना आता है? I was like no. Then he asked me कि आप गिटार बजाते हो? मैंने कहा मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने बोला मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए था कि मैं पहली बार ही लेके आया हूँ. तो फिर वो मेरे से पूछता कि आप कितने घंटे रियाज करते हो. मैंने कहा यो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट रियाज, लाइक व्हाट द फक. मैंने उसको बोला मैं सिंगर नहीं हूँ इसलिए मैं रियाज नहीं कर रहा. देन आई रियलाइज कि तुम रियाज तो गिटार के साथ भी कर सकते हैं ना अपने. सो दैट वाज अ फकिंग डम थिंग टू से. आई थिंक उस पॉइंट पे उसको समझ में आ गया था कि इसको कुछ नहीं पता भाई. सो आई टोल्ड हिम मैं आज पहली बार ही गिटार लेके आया हूँ अपने दोस्त से. So we started talking about music and harmonium. He was telling me कि he plays a harmonium. I was like okay dope shit. Then he says then he starts singing. ठीक है. Then he starts fucking singing. This guy fucking loved music bro. He starts singing. Then he said कि जिसकी ज़िंदगी में संगीत नहीं है ना उसकी ज़िंदगी अधूरी है. And I was like oh shit this guy just made my fucking day. एक तो मैं पहले से अच्छे मूड में था क्योंकि रात भर मी एंड हुकम माई फ्रेंड हम बस वही वीडियोस बना रहे थे. हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, हम गाने सुन रहे थे, वी वर मिक्सिंग शेयर, वी वर लिसनिंग लाइक वाइब भाई नेक्स्ट लेवल वाइब. मैं वैसे खुश हो. आई लव डूइंग ऑल ऑफ दिस ब्रो. आई लव क्रिएटिंग यू नो. सो मैं उस वाली वाइब में था ही ऑलरेडी. देन दिस गाय फकिंग मीट्स मी एंड ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड हाउ he plays a harmonium, how he loves music, और जिसकी ज़िंदगी में संगीत नहीं है उसका जीवन अधूरा है. And I was like yo this is some crazy shit. So वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा था बार बार. So लेकिन मैं I was like मैं थोड़ा ना शॉक में था कि wow like how the fuck did I meet this guy. And you know so after a while he starts singing, then he stops, then मैंने सोचा कि मैं भी इससे कुछ पूछ लेता हूँ भाई वरना इसको लगे कि ये कैसा बंदा था. सो आई नहीं मेरे को जेन्युइनली जानना था. सो आई एस्क्ड हिम कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, आप गाने सुनते हो. सो ही इज़ लाइक बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी असली में क्या है. अगर तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए तो जीवन में कभी शादी मत करना. एंड आई वाज लाइक oh my god where are we going with this. So he says अगर ज़िंदगी में अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो मेरी सलाह ये होगी कभी शादी मत करना, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो बीवी की टेंशन, बच्चे की टेंशन, दवा दारू की टेंशन, घर के राशन की टेंशन, ट्यूशन की फीस की टेंशन, स्कूल की फीस की टेंशन, बस टेंशन 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 टेंशन. एंड आई वाज लाइक oh my god like what the fuck. And in that moment I realized कि this guy I think wanted to be a musician but he was an old guy, like he was an old school guy, so maybe he was thrown into you know like life fucking happened like life happened to him, but he really loved music. So I think he like saw me like guitar लेके जा रहा था मैं, so he maybe thought कि मैं musician हूँ, I'm trying to chase a dream to become a musician, so he wanted to feel that energy. I'm just making assumptions but that shit really stuck with me, like कि वो बोल रहा है कि कभी शादी मत करना अगर तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीनी है. And I was like okay because that's true bro. Like how many people do you see in metros on roads जो कि jobs पे जा रहे हैं bro, they are doing this shit because they want to feed their family है ना, वरना और क्या ही रीज़न है क्यों फुद्दू जॉब करेंगे वो. बट दे हैव अ फैमिली, दे गोटा फीड देयर फैमिली, सो उनको करना पड़ रहा है ये. एंड एवरीबॉडी डज इट बट फकिंग आई कैन डू इट. फकिंग जो लोग करते हैं ब्रो, रिस्पेक्ट, फकिंग रिस्पेक्ट ब्रो. इट्स लाइक आई थिंक जो ओल्ड लाइक आर जनरेशन, आई थिंक वी हैव अ चॉइस, हमारे पास चॉइस है एटलीस्ट. बट लाइक आर डैड्स, आर मॉम्स और भी उस जनरेशन के लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी. आई थिंक दे हैड टू डू दिस शिट. लाइक उनका तो यही था ना कि यू ग्रो अप, यू गेट मैरिड, यू हैव किड्स, देन योर किड्स हैव किड्स. बट लाइक आई थिंक हमारी जनरेशन इज ब्रेकिंग दैट शिट, दैट होल साइकिल. आई डोंट नो, आई डोंट रियली नो इफ दैट्स ट्रू बिकॉज मैं सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देख रहा हूँ ब्रो. द वर्ल्ड इज वे टू फकिंग ह्यूज यू नो. और आई थिंक लोग अभी भी शादी करके बच्चे कर रहे हैं. आई डोंट नो, आई मीन ऑब्वियसली कर रहे हैं भाई, लाइक 7 fucking billion people on the planet. So yeah bro, I don't know what the moral of the story was, but chase your fucking dreams kids. I don't know if that's the moral. It's just don't get married. I don't even know if that's the moral. It's just do what interests you. Like what else can you do? Like do what
fucking interests you. But like everything else is just bullshit. Like, why do anything that's not meaningful to you? It's just not gonna feel good in your soul if you do something that you don't even want to do, bro. And every day, fuck that. Fuck that. So I think this is a very good transition into today's topic. Nihilism or hopefulness. I don't even think that's a word, but like, are you supposed to be hopeful about life, or are you supposed to be nihilistic? Because some people say कि if you are being hopeful about life, you are delusional, and you're not seeing life for what it really is. Because life is like, जिंदगी में बहुत सारी disappointments आती हैं obviously, and some people think कि वो तब होता है जब तुम hopeful होते हो. But it's like, if you're not hopeful, then why fucking live? You know? Then the opposite of hopefulness is nihilism. If you're not aware what nihilism is, मेरे को भी उतना नहीं पता, but it's just, nihilism is जब लोगों को लगता है कि there is no fucking point of doing anything. Because अगर हम as a whole देखें, bro, that's true. If we look at our planet as a whole, like and look at life as a whole, like क्या point है, bro? Why the fuck? You die at the end. Nothing is gonna matter how much fucking money you made, how much fucking connections you made, how many good memories you had. But it does matter though, while you are living those memories. So it's like a really fucking like yin yang wala scene hai. You are supposed to be hopeful, but this shit really don't matter. So हम कौन सी side पे जाएं? And I think young people really, I don't even think just young people, bro. I think old people also are confused about this. Because young people are hopeful, bro. We are hopeful about life because maybe हमने जिंदगी उतनी देखी नहीं है. But old people are neutral. I don't think even old people are nihilistic like totally, but they're like neutral. I don't know. But I better be fucking hopeful. अगर मेरे पास choice है कि I think you gotta be, I think when I say I think मैंने लोगों को when I say I think I mean मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है ये. So दूसरे लोगों के thoughts मेरे दिमाग में चल रहे हैं. Like original thoughts, like what the fuck are original thoughts? आधे से ज़्यादा thoughts हमारे दिमाग में जो हैं वो और लोगों के थॉट्स हैं जो हमें पैदा होने के बाद बस बता दिए गए और हम उनको फॉलो कर रहे हैं, या फिर हमने सुने कहीं से सोशल मीडिया पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे, और किसी पॉडकास्ट पे सुन लिया हमने. बिकॉज ओरिजिनली तो मेरे दिमाग में बस 3-4 थॉट्स आते हैं. इट्स लाइक आई वांट टू हैव सेक्स, आई वांट टू फकिंग आई एम जस्ट किडिंग. नो, बट लाइक ये आई एम नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ब्रो. आई वाज ट्राइंग टू बी फनी बट लाइक इट्स ट्रू दो. लाइक कितने थॉट्स, लाइक ओरिजिनल थॉट्स. पहले में से बहुत गंदे वाला सीन था कि या तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ किसी चीज़ से, लाइक किसी टॉपिक से, या फिर आई एम अग्रीइंग विद इट. बट लाइक व्हाई I can just not have an opinion about this shit. जो भी कोई टॉपिक चल रहा है, I can just say I don't have an opinion. You know, like that's a very good thing to have. Like I don't have an opinion, bro. I don't agree with you. I don't disagree with you. Fuck you. But yeah, hopefulness and nihilism. If you have a choice, let's talk about me because यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ. Everything is about Ankit. Hopefulness and nihilism में कोई choice मिलेगी तो I would rather be hopeful because you gotta look at life and meaning. Try to find meaning. अगर तुम्हें meaning ढूंढनी है तुम individual होके ही ढूंढ सकते हो meaning. Because जो चीज़ मेरे लिए important है वो दूसरों के लिए important नहीं होगी. I'm trying to be something in my life, वो मेरे लिए important है, but किसी और बंदे के लिए it's not fucking important. Like he can give, or he or she can give 2 shits about it. उनको कुछ और बनना है जिंदगी में. That's the thing about when you try to make something. If you make something, like if you're an artist, if you're a musician, you know, like when you're like let's say you are a painter, that the painting that you are making, you can't think कि ये painting किसी और के लिए meaningful है, या फिर like I'm recording this podcast. Why? It's a very fucking narcissistic thought कि किसी like somebody gives a fuck about what I have to say. But I don't
I don't do it for that, you know. I want to share this, I want to express myself, so I'm gonna express myself, and the people who want to listen to it, they will listen to it, जिनके लिए meaningful होगा ये. You can't fucking please everyone, you know how they say like you can't please everyone. So हर चीज़ सबके लिए मीनिंगफुल नहीं है. एज अ इंडिविजुअल कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए मीनिंगफुल है, एज अ इंडिविजुअल कुछ चीज़ें किसी और के लिए मीनिंगफुल है. बट when you look at as a whole, like nihilism makes sense because nothing matters. You're gonna die, your parents gonna die, your fucking if you have kids, your kids gonna die. You're not gonna be here to see them. Like death is a fucking next level thing if you actually think about it. Like the shit is gonna end. So why be embarrassed? You know, like embarrassment, bro, embarrassment. Let's talk about fucking embarrassment. Like हम स्कूल में कितने fuck देते हैं कि को हम कैसे लग रहे हैं, bro. Like मेरे बाल, oh shit. Like a guy fucking hit. I'm sorry, bro, if I'm like talking about you. So this guy hit me up on Instagram. He was talking. I don't even know if I want to share this. I'm really sorry if I'm like crossing a line, sharing somebody else's fucking feelings. उस बंदे ने मेरे को इतने like privately text किया था, but I'm just gonna say one thing. He was saying कि bro, I'm in a very fucked up mental state. I'm young, but I'm losing my hair. Bro, I was like, think about it. Like, what the fuck are you worrying about? And I think all men go through this shit because पता नहीं हमारी society ने hair के ऊपर इतनी तगड़ी focus दे रखा है कि you gotta have good hair. It's like, what the fuck? This shit don't matter. Like, school में होता था bro ये कि we are giving a fuck about किसके बाल अच्छे हैं. It's like, come on. School is like the most fucked up thing. Like, come on. Like sometimes I think about कभी जब मैं like अकेला होता हूँ, I'm walking or like doing something जहाँ पे मैं अकेला हूँ, I think about some shit like school के time से कि I'm like, why did I even do this just to look cool in front of somebody? And not just school. मैंने तो भाई like मैं उसके बाद भी स्कूल के बाद भी कितनी चीज़ें हमने ज़िंदगी में करी हैं जो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं because you wanna look cool in front of somebody. And like when you think about it, like who gives a fuck, bro, about your hair, about your how you look? And I'm not saying that हर कोई भाई सुंदर ही है दुनिया में. That doesn't matter. भाई everybody fucking looks different. I don't even know what the fuck I was saying. Yeah, like when we are in school, like that's our whole world. उस टाइम पे हमें नहीं लगता है कि दिस शिट इज गोना एंड, बट दैट्स जस्ट आवर होल वर्ल्ड एंड हम उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं. एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ अ स्कूल. आई थिंक दैट्स व्हाई दे थ्रो अस इन स्कूल, ताकि हमें ज़िंदगी के बारे में थोड़ा पता चले कि बिकॉज लाइक इफ़ यू रियली थिंक अबाउट दैट्स व्हाट स्कूल इज सपोज टू डू. हमें वो दुनिया का एक छोटा सा वर्जन हमें उसके अंदर रखते हैं वो, बिकॉज देर आर लाइक हायरार्कीज होती है ना स्कूल में, प्रिंसिपल, हेड प्रिंसिपल, फलाना ढिमकाना. सो दे टेल अस कि यो, you're fucking workers. they're fucking making slaves in schools, bro. They teach us कि तुम लाइन में बैठो, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो अथॉरिटी कहती है. Fuck you, motherfucker. Fuck you. मैं साइड ट्रैक हो गया, क्या बोल रहा था मैं. So yeah, this guy told me कि bro, I'm like really worried about my hair. And I think मैंने भी सोचा था कभी अपनी ज़िंदगी में एक टाइम पे. I think स्कूल में ही लाइक मेरे को हमेशा मैं हमेशा लंबे बाल रखता था. सो एक टाइम पे लाइक बिकॉज आई डोंट टेक केयर ऑफ लाइक हेयर एंड शेड, सो एक टाइम पे मेरा लाइक हेयर फॉल होने लग गया था. सो आई फकिंग पैनिक्ड. आई वाज लाइक yo, I'm gonna be bald, this was. I'm like bro, but like now I think about that, I'm like who gives a fuck? Who gives a fuck? And if you are a person who gives a fuck about कि किसके बाल अच्छे लग रहे हैं, bro, stay the fuck away from me. Come on. I really think that's just kids things. बच्चों वाली चीज़ें हैं. When you grow up you realize कि yo, nothing really matters. Not this. ये तो पक्का ही मैटर नहीं करता कि कोई क्या कैसा दिखता है या फिर किसके बाल कैसे हैं. Fuck that. So yeah, I would rather be fucking hopeful than nihilistic. Because if you're nihilistic, then okay, shoot yourself right the fuck now. Because nihilistic, if you're following nihilism, there's no reason to live. If you, अगर तुम्हें दिमाग में बिठा लिया कि कुछ मैटर नहीं करता, so okay, fuck it.
But if you're hopeful, at least you get to fucking enjoy जो अभी चल रहा है जिंदगी में. And that's why I think people have like passions. जो like जिंदगी में कुछ बनने का passion. I know a lot of people who are, I think मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे वही हैं who are trying to become something in their life. Everybody makes something. Somebody is a musician, somebody is an actor, somebody is a writer. No, I don't think I know any writers. ज़्यादातर मैं यूट्यूबर्स, म्यूजिशियंस एंड एक्टर्स को जानता हूँ. एंड आई थिंक yeah, like, but the burden of dreams, why do you even bother chasing a dream, bro? Like, we are chasing a facade, literally. हमारे दिमाग में dream है and we are chasing that. We are chasing something जो हमारे दिमाग में है and we are just chasing it. Why go through all the fucking sadness, self-doubt, confusion, and just, bro, like, when you are trying to do something in your life, जो चीज़ें, like, the things that are supposed to go wrong, they go wrong. And the things that are not even supposed to go wrong, they go wrong. And in the middle of it, you start doubting yourself ki, yo, am I even supposed to be doing this? Like, what the fuck? You're trying to chase something and तुम बीच में खुद को डाउट करने लग जा रहे हो कि, yo, do I even want to fucking do this? So, like, what the fuck? And the thing that gets you through all of that is hopefulness. You're hopeful, you're delusional. I think delusion is the word. कि you're thinking कि जिंदगी में कुछ अच्छा होगा. And I'm on that side, bro. I'm on that side because I have been on the side जहाँ पे मैंने सोचा कि yo, fuck this, कुछ अच्छा नहीं हो रहा. क्यों नहीं होगा, bro? Like, fuck. अगर मेरे पास choice है, I would rather be hopeful. और like ज़्यादा hopeful होने की भी ज़रूरत नहीं है because then you get disappointed. You know how they say कि तुम जितना ऊंचा एम करोगे उतना ही नीचे करोगे. Fuck it, bro, I'll fall. कोई दिक्कत नहीं है. You gotta be, it's like failure चलेगा मुझे. I don't give a fuck about failure. I can't live with regret. I don't think anybody should fucking live with regret. भाई, regret is the fucking poison. Failure is okay. Now you know कि okay, this is probably not for me. Let's try something else. That's okay. तुम्हारे अंदर, like, your soul is not gonna hurt, but regret fucking hurts in your soul, bro. Imagine being 80 years old and you are thinking, because I think I heard Nipsey Hussle say this, like, in the old days, in the lonely hours, this shit is gonna creep on you. Like, if you didn't go all the way and didn't try, like, if you didn't even try living this shit the way you wanted, when you're gonna be 80 years old, you're gonna be thinking ki, fuck, maybe I did that, maybe I did things that way जो मुझे सही लग रहा था, तो शायद जिंदगी कुछ और होती. Yo, fuck that feeling. मैं अभी सारी embarrassment झेल लूँगा, but fuck it, I'm gonna go through life doing what I really want to know, what I really want to do, what feels right to me, what aligns with my soul. Because दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी, ब्रो. लाइक, दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से तुम नहीं चल सकते. आई एम नॉट सेइंग कि तुम हमेशा सही होगे. लाइक, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही होऊंगा, या फिर जो तुम, इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन लाइफ, तुम हमेशा सही होगे. बट एटलीस्ट यू कैन फेस कॉन्सिक्वेंसेज for your own actions जो तुमने लिए, किसी और ने नहीं दिए तुम्हें. Because life is gonna happen, bro. You're gonna be like, या तो तुम खुद डिसिप्लिन हो जाओ. I think Jordan Peterson says this. Either way, you're gonna get, या तो तुम खुद डिसिप्लिन हो जाओ, और life is gonna discipline you, and you don't want that. Rather be fucking disciplined willingly face your fears and do that, because वो ज़्यादा अच्छा है भाई. Because what life does, go in a metro at 5 or like 6 p.m. You're gonna find out if you live in Delhi. I just see people and I'm like, yo, I would rather just wake up at 4:30 a.m. and bust my ass and doing something that I really want to do, rather than
you know. And it's like I'm not being like, yeah, yo, मेरे को तो अपनी जिंदगी में सब मिल ही गया है कि मैं तो ये कर रहा हूँ. Fuck no. I'm confused as fuck every day. ये podcast record करने से पहले I was fucking confused. I'm working on a video right now. वो वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो रही, पता नहीं क्या, यू नो, लाइक अभी मैं उस वाले फेस में हूँ कि मैं सारे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं वीडियो के. एंड मैं अपनी लाइफ में भी उसी फेस में हूँ कि सारे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट लाइक यू कैन फील कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं. एंड दैट्स लाइफ ब्रो. ये करते करते वी गोना रीच आवर डेथ बेड्स एंड आई एम गोना बी फाइन if I die trying. Shout out to 50 Cent, bro. Get rich or die trying. It's like, do whatever you want to do and die trying doing that. And like when you go through life, तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें मिलने लग जाती हैं वो. If you really set your intent right, you meet people जो वैसे ही हैं. Because I have started to notice कि जो चीज़ें मैं 2 साल पहले सोचता था ना कि yo, I really want to be around people who are creative, who make something, who are trying to become something in their life. And now, like, bro, my friend circle is that. I don't know anybody who's, I mean, obviously, kuch log honge, but most of the people that I talk to or hang out with, everybody's trying to do something. And I fucking love it. Because I can just feel it, bro. Like, these are my people. I think I talked about this बहुत पहले in a podcast कि I never felt कि मैं like I belong anywhere with people, but then I found YouTube, then I found running, then I found working out, all of this. I was like, yeah, this is where I fucking belong. And doing this podcast is the same. Like I really fucking enjoy this, yo. I really fucking enjoy this. So yeah, man. Call it delusion, call it like whatever you want to call it, but I would rather be hopeful than nihilistic. I'm in that phase of my life where I'm hopeful. Let me know tum kaun se phase mein ho. And yeah, thank you so much for listening to this part. I really had fun recording this. I always have fun recording this. I don't know, I just feel like I just say everything jo bhi mere dimag mein hai and I can just let it go. It's fun. So yeah, thank you so much for listening. I'm gonna see you very soon when I have something to say or a guest, because now I'm really focusing on fuck it, I'm not gonna say I'm focusing on this and focusing on that. Jo bhi natural lagta hai, I'm just gonna do that. I really like talking to people and I want you to meet and I want you to like hear a lot of people that jo mujhe lagta hai ki bahut zyada interesting log hain ye, and I think you're gonna love and I think you're gonna love them. So they got fucking creative brains, yo, and I want you guys to listen to them. So yeah, that's usi process mein hu main. I'm trying to do more podcasts with people, and ye solo podcast to chalte rahenge, bro. Like I love doing it. So yeah, thank you so much. Love you. Bye bye.